Yeah. Um, yeah, I tried to tell you about the diversity in terms of the structure of microorganisms, the various groups that you saw, and the reproductive cycle. And now it is important to know how this enormous diversity is catalogued. And what happens if you chance upon a microorganism which you believe to be new? So how is it established as a novel microorganism? There have to be strict rules for such groupings, which are accepted by the entire scientific community. So today we'll talk about this science of cataloging called as taxonomy. And we will focus on microbial taxonomy today. Now, the term is derived from taxis, which is arrangement or order, and nomos, which is law, or even nemein, which is to distribute or govern. And so basically taxonomy is the science of classification. And as per Trooper 1991, if we were to define microbial taxonomy, it is the study of the diversity of microorganisms with the aim of organizing and prioritizing in an orderly manner. To talk about the importance of taxonomy, there are several reasons which stress upon its significance. The prime being with the kind of diversity we have encountered till now in our lectures, it's important to catalog it, and taxonomy helps in classifying and arranging this diversity into groups or taxa on the basis of the similarities. Further, microbial taxonomy helps scientists to actions to frame hypotheses for further research based on the knowledge of identical bacteria. So basically, it serves as a yardstick. And then, of course, just like in other areas, taxonomy includes naming, which makes it scientifically convenient for efficient communication with precise names assigned to different microbes. And once such a cataloging is in place and the naming system is in place, it becomes easier to identify bacteria. Now, taxonomy is especially important for microbes. Actually, serious classification of microorganisms, as you would understand, began only towards the end of 19th century when methodological developments in microbiology allowed the study of microscopic organisms by visualizing and also being able to grow them. In fact, the main problem arises from the need to isolate new taxa as living pure culture in the laboratory, which hampers the speed of classification process. But such a requirement is essential and beneficial also, so that it's available to the scientific community, which does not happen for other organisms, which you can see, I mean, other microorganisms, I mean. Now, you will see that the methodological innovations, they have influenced the speed of taxa descriptions. From the graph, you can understand that a drastic shift in the speed of descriptions occurred in the early 90s. It is because of the advent of the technique of sequencing DNA that facilitated the description of new species. Though I have to mention that we are still able to culture less than 10% of bacteria. And like I mentioned, culturing or having the bacteria or microorganism in its pure form is a must for not just its classification, but also its nomenclature. Now, there has been considerable debate over the definition of taxonomy and how it's related to, some people might have heard the term systematics. Like I said, taxonomy in Greek means putting in order, while systematic, it's kind of a general term which says putting together. So we will not discuss this debate, but for our own convenience, we will consider the main difference between taxonomy and systematics. Being taxonomy is involved in classification and naming of organisms, while systematics is a term which involves the determination of evolutionary relationships.
So taxonomy can in fact be considered as a branch of systematics as per one school of thought. But like I said, let's not get into this debate. The three activities of classification, nomenclature, and identification are the components of taxonomy for any kind of taxonomy. Is defined as the arrangement of organisms into categories or taxa on the basis of similarities or relationship. Nomenclature, as the name says, involves the assignment of names to the taxonomic units, which have been characterized and classified. And finally, once the classification is in place, so are the rules of nomenclature. Taxonomy includes identifying new species or assigning the newer isolates to the catalog thus generated. And we will now take up each of this component to understand what it actually entails. The oldest system of classification has been the natural system of classification. Now I'm skipping, deliberately skipping artificial system, which existed before that, as it was mostly for higher organisms. Natural systems arrange organisms on the basis of a number of features that they share. And this was opposed to the artificial system, which was based on just a few characters shared by organisms. In natural system, grouping is done by two means, by phenetic assessment and by phylogenetic approaches, or phenotypic and phyletic respectively. Phenetic classification refers to grouping on the basis of mutual similarity of phenotypic characters, those that you can observe. I mean, these are the characters which a genotype decides and that is expressed. Here, a system is considered to be the best or robust if maximum number of attributes are taken into consideration. While a phylogenetic system includes grouping on the basis of evolutionary relationship from organisms, between organisms. Now, this includes a comparison of genetic information, a comparison of the gene products, and so on and so forth. For phonetic classification, which is based on phenotypic characters, numerical taxonomy has been used, which includes a binary matrix, which is generated by assessing whether or not a character is present or it's absent in an organism. And such a profile is generated for more than about 50 characters of any organism, and it constructs a similarity matrix, which can be represented as a dendrogram of this sort. In this, there is no special weightage given to any character. Every character is considered to be of equal significance. When grouping is done into various levels of hierarchy or taxonomic ranks, taxon refers to the group of organisms in any particular rank. Okay? And so what is this hierarchy? You might be aware of this. There are different levels starting from domain or kingdom to genus and species. And here are some mnemonics that I have presented. So dumb King Philip came over from Great Spain, domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus, and finally species. So just to show you an example, Escherichia coli, the name Escherichia is a genus name, while coli is a species name. And you will see the sequence, the hierarchy is starting from kingdom. Division is actually phyla from the mnemonics that we just saw. So this is how a classification hierarchy looks like. Now I would like to know from you, what do you understand when I say species? What do you understand by species, human species? How do you define species? Tell me. हाँ भव्या. Species are a group of organisms that can reproduce with each other. Okay, good. Anybody else? How do you define species? Bhavya, you can lower your hand. Nobody else. So Bhavya,
Do you think this will be an issue with prokaryotes? Defining a species? With each other? कोई sexual reproduction की बात हुई है prokaryotes में? Anybody? So species is a group of, somebody says different DNA sequence. Species is a group of organisms which can interbreed. This is the classical definition of a species, but the concept of is quite different when you talk of prokaryotes, unlike in eukaryotes. And I would like you to come back to me in the next class with what is the challenge in defining species in prokaryotes and how best we can do it. We are going to have the first couple of minutes devoted to this discussion, and you will tell me what are the issues related to species, the concept of species in prokaryotes. Okay, so I'll move to the characters which are mostly used in taxonomy. These can be categorized as either classical characters or molecular characters. And I will be talking about a number of techniques here as well. So you have to stop me when you don't understand a particular thing. When we come to the molecular characters, I know. The classical characters include morphological, metabolic and physiological, ecological attributes as well as genetic attributes. So I've taken this directly from Prescott. Here is a list of some morphological characters which are used in phonetic classification. For example, starting from cell shape, cell size to what are the kind of appendages, the mechanism, motility, color, endospore, whether or not it has endospore. These are some of the morphological characteristics. While physiological and metabolic characters includes primarily, so what are its requirements, like carbon and nitrogen source, what are the energy requirements, what are the different growth conditions, what does it produce in the form of a secondary metabolite, and what does it store. These are all characters which help in grouping on the basis of physiological and metabolic features. Now, when you talk of ecological characters, it includes what kind of habitat an organism prefers, what kind of associations it enters into, the type of life cycle it experiences. And when I say genetic characters, it only means the extent of genetic exchange that is possible in the organism in question. Because in prokaryotes, you will rarely see cross-genera genetic exchange. So that also helps in determining whether or not organisms be same genera or have to be differentiated into different genera. Now, these are as far as the classical characters are concerned. Molecular characteristic refers to assessing the nucleic acid content. There are various parameters. You can assess just the base composition of nucleic acid. You can see the hybridization, how it hybridizes with the target or the nucleic acid in question. Then you can generate fingerprints with DNA. You can eventually sequence the nucleic acid and compare the nucleic acid sequence with the organism in question. And also, such a comparison is possible with the total proteins of an organism. So, like I said, these are the different techniques that I'm going to talk about. First, I would like to know from you कि तुम्हारे बायोकेमिस्ट्री में तुमने न्यूक्लिक एसिड कर लिया है या फिर SBL में कर लिया है? कोई मुझे बताएगा? मैम बायोकेमिस्ट्री में नहीं किया। SBL में? आई डोंट थिंक सो। तो डीएनए के बारे में क्या जानते हो? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड की बात करनी है हम लोग को, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में क्या जानते हो? What is it that you know? बताओ, जनरल तुम लोग के स्कूल के सिलेबस से या फिर अभी व्हाट इज डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे पता है, या क्या देखा है तुम लोगों ने कहीं पे भी फिगर में, कैसा होता है? इनफैक्ट मैंने कार्बोहाइड्रेट चेन में 2 कार्बोहाइड्रेट चेन में बेसिस लगे होते हैं, 2 मतलब डीएनए में 2-3 तरह के बेसिस और दूसरे में
मतलब आरएनए में 3 तरह के बेसेस वे आपस में अटैच होते हैं। अच्छा, कुछ और कौशिक के अलावा किसी को कुछ बोलना है? डबल स्ट्रैंडेड होता है ये पता है तुम लोग को? जिसमें और डबल स्ट्रैंडेड होता है और ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, ये पता है? Yes, ma'am. अच्छा, ये पता है कि देयर आर 4 bases इन द Yes. डीएनए? Yes, ma'am. ATGC AGT. सुना है? हाँ, ATGC ठीक है। इसमें the and there is complementarity between the two strains. So for example, A on one strand will have form hydrogen bonds with T on the other strand, and similarly G will form hydrogen bonds with C. ठीक है, हमको बिल्कुल न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस नहीं करना है यहाँ पे, but because I have to take up these techniques, it is important for you to know that such kind of a complementarity exists, and the two are only linked by these hydrogen bonds. The two strands are linked by these hydrogen bonds. Now, A and T, when they are forming this association, they are linked with 2 hydrogen bonds, while G and C, they are linked with 3 hydrogen bonds. So the stronger association is between the base G and the base C of the other strand. ठीक है, इतना अगर क्लियर हो तो हम आगे बढ़ेंगे। इतना समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. So when I say nucleic acid base composition, तो अब तुमको एक बात ये भी समझनी होगी कि if you know the sequence of any one strand, you will automatically understand what is the sequence of the other strand because of this complementarity. The base sequence आप count करते हो, A, T, G, C, ये sequence आप देखते हो, तो you will be in a position to understand what is the sequence in the other strand, in the complementary strain. So when you're talking of molecular characters, the nucleic acid base composition is referred to as the G plus C content. G plus C constant content, because it is this G and C which actually determine the tight association between the two bonds. Higher the G plus C, higher would be the association, and more difficult will it be to separate out the two strands. So this G plus C constant is a content is a characteristic for a particular taxon, and it is calculated simply by dividing the number of G plus C bases by the total number of bases into 100. But microorganisms, especially bacteria, they show a range of GC content. This range is quite high. It's between 25% to 75%. तो नेक्स्ट क्लास का आपका दूसरा असाइनमेंट, पहला असाइनमेंट मैंने बोल दिया, दूसरा असाइनमेंट ये है कि आप मुझे बताओगे कि ह्यूमन बीइंग्स में जीसी कंटेंट क्या होता है। ठीक है, फिलहाल तो मैंने आपको रेंज बताया कि बैक्टीरिया में देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इवन इन टर्म्स ऑफ जीसी कंटेंट, बट सो हाउ इट्स important for taxonomy is that within a genus, the percent G plus C does not vary more than 10%. So it is always there's a similarity, and this difference is only less than 10% between a genus. And this is one of the molecular characters that helps in grouping microorganism. But you have to understand that G plus C does not give any information regarding the similarity of the DNA sequence, the genes of the two organisms. It only talks about the content per se of G plus C. So two organisms with similar G plus C does not necessarily make the same taxon. They might be very different organisms. Just because of G plus C content, you cannot say the same of the two, let's say, same genus. But if they are in the same genus, they have to have a G plus C content less than 10%, a difference of less than 10%. ठीक है, बोलोगे तो हम बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब क्लियर है। The other method is nucleic acid hybridization. Now here I wish to introduce you to a term called as TM or melting temperature. When the DNA is subjected, this double-stranded DNA is subjected to either a higher temperature or to any kind of chemical denaturant, the two strands tend to separate. So they form the single-stranded separated molecules. The temperature at which the half of this DNA strands are single-stranded is called as the melting temperature. Temperature at which one half of the DNA duplex will dissociate to become single-stranded is defined as the melting temperature. और इसकी एक significance है. This is the reason why I mentioned to you.
Coming to the technique of nucleic acid hybridization, the technique involves trying to bring together the nucleic acid from different organisms to establish the extent of homology. Kitni similarity ho sakti hai? This is what you estimate by nucleic acid hybridization. This is done by denaturing the DNA of two species to be compared and then mixing it so that, let's say, species A and species B could form double-stranded molecules based on their homology. Now, for closely related species, the sequence homology would be high as expected. So the two strands will be tightly associated compared to when the two species are distantly related. So this kind of a study, which is based on hybridization of nucleic acid, is called as DNA association. Okay. Any issues with this? You're comparing two species. हाँ पूछो. किसी को पूछना है? Vishantan? No, ma'am. Fine. So here the thumb rule is that two strains whose DNA shows at least 70% relatedness and less than 5% difference in TM are considered same species. Basically, you're coming to some governing rules which would let you classify or categorize organisms under the various taxa, and on the basis of G plus C content, you saw that how the relatedness is, and on the basis now of hybridization, you have these numbers ki 70% relatedness hona chahiye and less than 5% difference. Only then are two members considered to be of the same species. Now that is about just hybridization. Again, you do not know the exact sequence as of now. This is not sequencing, fingerprinting, sorry. DNA can also be used to generate such signature fingerprints of bacterial members, which can be an identifying parameter. The difference in nucleic acid sequence is actually harnessed in generating such profiles. So there are various techniques by which fingerprinting can be performed, but these are, for example, the profiles of the same genera but different species, and you will see how the DNA sequence leads to such differences in the fingerprint. These are signature fingerprints. So if you get a fingerprint of this sort, you can actually assign it to the particular genera when you have a data bank of database of such kind of fingerprints generated. The next method is to sequence the DNA. Of course, that is the best method to estimate relatedness with other organisms for classification. Here, the sequencing could be done either of a particular gene or marker, or the better option is to have multiple markers compared to establish relatedness between. And such locus or genes is called as MLST, or multiple locus sequence typing. Now, ribosomal RNA, especially the 16S RNA, which is a component of the smaller subunit of prokaryotic ribosome, if you remember, has been popularly used as an efficient marker to establish relatedness. Why is this a preferred marker? We will discuss in a minute. But now the best technique, of course, is to sequence the entire genome and to assess its relatedness to other species. And with the advent of next generation sequencing, this has become quite handy. This is just a figure to show you how the different markers or genes that have been used in bacterial and fungal taxonomy, how some of the genes could be common for both these taxon, while there are certain specific genes that are considered, for example, for fungus or for bacteria. In fact, fingerprints can be generated from the organism's nucleic acid, like I mentioned, which are characteristic for these organisms and serve as an efficient marker parameter, just like I mentioned, for classifying organisms. Okay, now coming to, and this is important, students, coming to why we use for bacteria, we use 16S rRNA as a marker for classifying organisms or for assigning an organism to a particular genera or a particular taxon. 16S rRNA, as you know, is the structural component of the ribosome. And ribosomes function, you're all aware of, it is needed for protein synthesis. So this is the prime reason, of course, is that 16S RNA is ubiquitous. It is present in all.
Now, tell me one thing, students. How many of you know what PCR is? Polymerase chain reaction किसको पता है? बोलो. कितने लोग आईजीएम में इंटरेस्टेड थे? सत्यकम सिंघल. Can you Yes, tell me ma'am. what is PCR? Ma'am, I don't know much about it. What is it that you know about it? Much तो छोड़ो. Ma'am, it's related to cloning of genes and like it's called polymerase chain reaction and just Anybody that. else who knows some more specifics? ठीक है सत्यकम, you can mute yourself. Uh, PCR is actually a means of xeroxing, making copies of a particular segment of DNA. Huh? And you can make copies of segments of DNA or a gene without knowing the gene. What you have to know is the flanking regions, the regions which are neighboring to this particular gene of interest. If you just know those sequences, based on these two sequences, you can actually amplify or make copies of the gene of your interest. Now, why I'm telling you this is because of its importance is in 16S RNA. So it is ubiquitous, of course, it's ubiquitous. It has various regions, and in the next slide, which are conserved across the whole domain, across entire bacteria. You will have these sequences which are completely constant for every bacterial member, but they're also variable regions which are characteristic for a particular genus or characteristic for a particular species. So if you know the sequence of this particular variable region, you will be able to assign it to a particular taxa. Let's say Escherichia coli will be different from Bacillus subtilis and so on. Now, because it has been so popularly used, there is a huge database of sequences of 16S rRNA. So you can always, when you get a new sequence, you can always hit it to the database and see what is the percent match and assign a particular organism to a taxon. This is because of this functionality of 16S. It is involved in protein synthesis. It is fairly stable. It does not really readily incorporate mutations or changes with evolution. There are multiple copies, so detection is easier, and the length is moderate. It's around 1600 base pair for the 16S RNA, 15 something actually. And here the cutoff is there has to be 95% match for genus level identification and 98.7% match for species sequence similarity. So if you get that kind of a similarity, you can assign it to a phylogenetic taxon. But the cutoff value has been re-evaluated, and for species it has changed to 98.65. I mean, this is something which is not really, this is open to further changes as well. अब होता क्या है, what you do is this is, if this is the entire stretch of 16S RNA, you will see that there are 9 regions which are variable regions, which are going to be taxon specific or species specific. But the green regions are the conserved region, which are present in all bacteria. So for example, you know that V3 is a discriminating marker between species. Just for an example, V3 is a discriminating marker, and there is a novel species for which you do not know what is the sequence of V3, but what you know is the flanking region. You know the sequence of these green zones. So you can perform a PCR just by using the information on this flanking region, and you will get hundreds and hundreds of copies of this gene, which you can amplify and then hit it with the database to check if it actually exists or is it a new novel species. Okay. Similarly, you can do it for other markers also. There are various specifications as to V2 will be more characteristic or will serve as a signature for a particular taxon, V8 for another one. So this is the benefit that this kind of a marker has with both conserved and variable regions. किसी को समझ में आ रहा है? कोई मुझे कुछ feedback देगा इस पे? Anybody?
क्या हुआ, कहाँ हो तुम लोग सारे? कशिश समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? 16S क्यों इम्पोर्टेंट? मैम समझ तो आ रहा है लेकिन थोड़ा सा मतलब कीप अप करना थोड़ा टफ पड़ रहा है तो टर्मिनोलॉजी वहीं के पे कारण। रोकते क्यों नहीं तुम लोग? जहां पे मुझे तुम लोग हैंड रेज करोगे हम वहीं स्टॉप करके तुमको 3 बार 4 बार समझाएंगे, लेकिन अगर तुम लोग नहीं बोलोगे तो फिर तो मेरे लिए बहुत इजी है कि हम बस स्लाइड्स आगे बस टर्न करते जाएं और समझाते जाएं। कहीं तो रोकोगे ना तुम लोग मुझे। मुझे पता है कि तुम लोग न्यूक्लिक एसिड तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री में, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम लोग को नहीं, तो तुम लोग स्टॉप नहीं करोगे। हम तुम लोग को खोद खोद के पूछ रहे हैं, बताओ समझ में आया कि नहीं, क्या नहीं समझ में आया बताओ जरा। मैम वही कि तीसरा मतलब प्रॉपर्ली वर्क कैसे करता है वो क्लियर नहीं हो पा रहा वो लाइक पीसीआर तो प्रॉपर्ली वर्क कर, वो तो हमारे कोर्स में है नहीं। हम बस तुम्हें सिर्फ इसीलिए बहुत ही ब्रॉडली तुम्हें ये बता रहे थे कि उसकी बहुत सारी कॉपीज होती हैं, है ना। और अगर तुम्हें पीसीआर, तो तुम्हें बहुत सारी कॉपीज क्यों चाहिए? जब तुम्हें ऑब्वियसली तुम्हें अगर डिटेक्शन लिमिट अगर देखो तो हर चीज का, व्हेन यू हैव जस्ट वन कॉपी इट माइट नॉट सर्व द मेथड दैट यू आर ट्राइंग टू अडॉप्ट, इट माइट नॉट बी डिटेक्टेड। हाँ, so the purpose of PCR is to make many copies. लेकिन what I wanted to tell you was कि when you perform the PCR of a region which is so specific to a particular bacterial member, that and it might also happen that the particular organism does not have a database, है ना। तो if it does not have, तुम्हें PCR के लिए हमेशा कुछ known segment चाहिए, तब वहीं पे तुम्हारा कॉपी करने के लिए एक एंकर की तरह होता है जो कि फिर you have two anchors here and here, and पीसीआर में अगर आपको ये दो रीजन, कोई भी फ्लैंकिंग रीजन पता है तो आप उसके अकॉर्डिंगली इस पूरे बीच के सेगमेंट को जैसे आप जीरोक्स करते हो वैसे जीरोक्स कर सकते हो। पर अगर आपके पास एक मार्कर है, व्हाट विल हैपन इफ यू हैव लेट्स से अ मार्कर विच कंप्लीटली वेरिएबल रीजन्स, तो क्या होगा? या कंप्लीटली लेट्स से कंजर्व्ड रीजन, अगर हम एक ऐसा मार्कर यूज करते हैं फॉर पाइलोजेनेटिक एफिलिएशन which is conserved throughout in all bacteria, can one of you tell me what is going to happen? बोलो, अब तुम लोग मुझे नहीं जवाब दोगे तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। It won't replicate properly. नहीं 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 नहीं, अनन्या जी जस्ट ओके, रेप्लिकेट नहीं, नहीं रेप्लिकेट की तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो कौन Not करता है? replication in the sense like you won't be able to copy the DNA, Why? that specific sequence, because हाँ बोलो। they don't have the placeholder markers for them, right? If you have only like variable regions. हाँ करेक्ट करेक्ट, वेरिएबल रीजन में इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज इन देयर, जब हम कह रहे हैं कि वेरिएबल इज अ सिग्नेचर फॉर एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट विल वेरी बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ लेट्स से द सेम फाइला और द सेम फैमिली, तो यू विल नॉट नो वेयर टू एंकर दिस, है ना। वेयर टू एंकर योर पीसीआर में क्या होता है, दो प्राइमर्स होते हैं जो सेट करते हैं। हाँ कशिश मैम अगर उसमें लाइक कोई वेरिएबल रीजन या फिर कंजर्व रीजन नहीं है तो वो भी तो एक मतलब स्पेसिफिक मार्कर हो गया कि मतलब ये उसकी प्रॉपर्टी हुई। नहीं नहीं, वो हो तो गया बिल्कुल, लेकिन मान लो पूरा का पूरा कंजर्व्ड है और तुम ऐसे मार्कर को फाइलोजेनेटिक एफिलिएशन के लिए यूज कर रहे हो, तो तुम इतना तो कह सकते हो कि ये बैक्टीरिया है, बट उसके आगे कभी रिजॉल्व नहीं कर पाओगे डिफरेंट हायरार्की पे, है ना, क्योंकि वो कंजर्व्ड है, वो सब बैक्टीरिया में। तो मान लो तुमको ये आइडेंटिफाई करना है कि वेदर और नॉट इट्स बैक्टीरिया और आर्किया, देन यू विल प्रोबेबली नीड अ रीजन लाइक दिस जो तुम्हें पता है कि हर बैक्टीरिया में। लेकिन अगर तुम्हें उसको असाइन करना है किसी भी और लेवल पे हायरार्की में लोअर डाउन, you need to have certain signature sequences जहां पे तुम्हें वो बताएगा कि the resolution goes deeper than just saying it's a bacteria। ठीक है, कशिश समझ में आया? यस मैम। तो आइडियल मार्कर 16S RNA को इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों तरह के रीजन्स हैं। तो जैसा कि विशांत, अगर पूरा का पूरा वेरिएबल स्ट्रेच है तो you will, where will you, how will you amplify it, because you will not have two anchors। जो तुम्हें दो प्राइमर किसी भी पीसीआर के लिए, अगर तुम्हें दो बाउंड्री सेट करने के लिए नोन रीजन्स चाहिए और वो पूरा का पूरा वेरिएबल है एंड द स्पीशीज अंडर कंसिडरेशन इज न्यू, there is no information, how will you even amplify the gene because you do not know the flanking regions? विशंतन यही कह रहे थे ना तुम? Yes, ma'am. और तो किसी भी मार्कर में इफ यू हैव completely conserved or a completely variable region, it might not have the same level of resolution as a marker like 16S which has both conserved and variable regions। ठीक है,
अब पता नहीं तुम लोग को क्या समझ में आया क्या नहीं, तुम लोग पूछ भी नहीं रहे हो मैं से, हम तुम लोग से बोल रहे हैं तो तुम लोग पूछ रहे हो। ठीक है, other than nucleic acids, that was as far as one biomolecule was concerned, nucleic acid. Now the similarities between amino acid sequences and proteins also enable classification of microorganisms. So similar to sequencing the nucleic acid, you can actually amino acid sequencing can also be performed and similarity assessed with that in the database. Now both these biomolecules they serve as clocks, or they serve as molecular chronometers to measure the amount of change that would have accumulated with evolution over time. So they can help determine the phylogenetic relatedness. Now, modern taxonomy, what is called as polyphasic taxonomy, takes into account all data to determine phylogeny and to assign organisms to various groups. And we will discuss these, most of the characters we have already discussed. With the kind of talking about, so whether it is DNA hybridization or percent GC content, or you say sequencing the rRNA, this is the kind of resolution that you have to assign it to which taxon. So for example, RNA sequencing can give you an information till the species level. Same as with whole genome sequencing, it can even give you information till subspecies level. While these are some of the other techniques, some fingerprinting techniques, we did not talk about it, which gives you subspecies information. Now, when you have an organism in question that you would like to classify, there's a complete set of methodology. You cannot simply perform one method and assign it to a new species or assign it as a new species. There's a complete flow chart by which you have to do this. So if there's a bacterial isolate, let's say from an environmental sample or from a clinical isolate, you have to perform 16S rRNA analysis. And like I said, we had these numbers wherein what is the percent match with the closest phyla will determine whether or not it's novel, the first hint that you will have. Then if it's presumed to be a novel isolate, you perform the polyphasic taxonomy that I just mentioned. Phenotypic and genotypic analysis is to be performed, and even complete genome sequencing is to be performed, and only then you will be able to describe a species as a new species. And microorganisms it is also worth mentioning that the authors describing a new bacterium are required to deposit a culture of the organism in an authorized culture collection, so that it is maintained as a type culture, and its entry is provided with a separate index number by the collection authority. And this is important for microorganisms that you always mention. Ha, Satyakam? Ma'am, by type, what do you mean by type exactly? Like a similar kind of, मतलब एक bacteria के different types ऐसा? पहले तो एक बैक्टीरिया मतलब क्या होता है? For example, like मतलब Escherichia coli, for example. हाँ, तो एस्चेरिचिया कोलाई अगर है तो Yeah. हम जब टाइप कल्चर कह रहे थे तब तुमने ये पूछा, ये जब हमने कहा कि इसको मेंटेन करना होता है टाइप कल्चर की तरह. मैम बिकॉज सब मतलब 16 RNA का मैम एकदम से बहुत क्लियर नहीं हुआ था, तो दैट्स व्हाई. हाँ तो पूछो ना, क्या नहीं क्लियर हुआ था? 16S मैम RNA अब तो मार्कर था सत्यकम, ठीक है. 16S हम तुम्हें ये बता रहे थे कि why 16S is preferred over some of the other markers. This is just one marker, but like I said, multiple loci से करोगे तो robustness होती है कि कितना relatedness है या कितना difference है. Basically आप यही देख रहे हो कि known species से कितना hit हो रहा है, कितना match हो रहा है. हाँ. Type culture matlab, for example, you have Escherichia coli and you have a particular isolate of Escherichia coli, and you have a new Pseudomonas fluorescens strain. You have to submit these in a culture collection so that it is क्या कहते हैं उसको, it's a template or it's a representative of that particular species, which can of course after culturing be studied thoroughly and is also maintained as this particular. तो कल अगर कोई और species discover होती है इस type strain से, उसका comparison करना होगा. If you want to
decide that the next species is novel or it belongs to the same culture, same affiliation. ठीक है? सत्यकम ठीक है? Not really, but ठीक है और maybe. तो तुम अगर कैटलॉगिंग कर रहे हो, हाँ, तुम्हारे पास 10 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एस्चेरिचिया है, हाँ, तुम्हें हर स्पीशीज का एक कल्चर कलेक्शन क्या होता है ये पता है? कल्चर कलेक्शन एज द नेम सजेस्ट क्या होगा, जहां पे पूरा का पूरा मेंटेन्ड है वो, हाँ, एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को आप एक टाइप कल्चर कहते हो, विच इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइलोजेनेटिक अफिलिएशन। समझ में आया? अगर तो फॉर एग्जाम्पल तुमने कहा कि मैंने एक नया स्ट्रेन डिस्कवर किया है विच इज एस्चेरिचिया कोलाई, सबसे इजी नेम जो तुम लोग को समझ में आता है। अब एस्चेरिचिया कोलाई के एक सेल से जो जेनरेट होंगे सेल्स, दोज विल बी आइडेंटिकल टू दैट पर्टिकुलर एस्चेरिचिया कोलाई, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि तुम्हें पता है कि एसेक्सुअल होता है। ओके अच्छा मैम, एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैम, जैसे विब्रियो कॉलरी होता है एंड हाँ। उसके जैसा कुछ एक चीज और होती है ना, लाइक मतलब ऐसा एकदम से याद नहीं आ रहा, सो मैम हाँ। उसको कहते हैं ना टाइप कल्चर बेसिकली। जो याद नहीं आ रहा है उसका हम कैसे बताएं कि उसको क्या मैम उसको मतलब जैसे विब्रियो कॉलरी हो गया तो देयर मस्ट बी समथिंग लाइक अदर थिंग लाइक विब्रियो कॉलरी ना, जो जैसे कॉलरा जैसे होता है तो कोई और चीज जो विब्रियो जैसे टाइप तुम के। सेम जेनरा की बात कर रहे हो तो मान लो बैसिलस मेगाटीरियम ले लेते हैं और बैसिलस एंथ्रासिस ले लेते हैं, ठीक है, इसमें जेनरा सेम है और डिफरेंट है, ये मीन हाँ कर रहे हो ना तुम, है ना? हाँ हाँ तो हाँ अब टाइप कल्चर जब मेंटेन करते हैं ना तो क्या करते हैं कि विब्रियो भूल जाओ, बैसिलस मेगाटीरियम के भी एक सेल से ओरिजिनेटेड पॉपुलेशन को हम एक कल्चर की तरह कैटलॉग करेंगे उस कलेक्शन में, और बैसिलस के एंथ्रासिस स्पीशीज को भी हम एक प्योर कल्चर मेंटेन करेंगे उस पर्टिकुलर कल्चर कलेक्शन में, which is a type for that particular culture. It is a representative of that particular species. समझ में आया? हाँ हाँ मैम है ना? थोड़ा सा। तो और हाँ, थोड़ा सा अच्छा, तो और क्यों तुम सेम एक सेल से डिराइव्ड पॉपुलेशन को लेते हो ताकि आइडेंटिकल हो, उसमें कोई डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी वन पर्टिकुलर प्योर कल्चर विच इज अ टाइप फॉर दैट पर्टिकुलर अफिलिएशन। ठीक है, तुमने विब्रियो का एग्जांपल लेने की कोशिश की, मैंने बैसिलस से कहा कि सेम जीनस बट डिफरेंट स्पीशीज है, हर एक का एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव उस कलेक्शन में होना चाहिए, दैट इज व्हेन यू कॉल इट अ न्यू स्पीशीज। क्योंकि तुम्हें जब नेक्स्ट टाइम हिट करना होगा तो तुम उससे कंपेयर कर सकते हो इस डेटाबेस से कि वेदर और नॉट द पर्टिकुलर स्पीशीज इज न्यू, ठीक है, या वो पहले ही आइडेंटिफाइड तो नहीं है कहीं, ठीक है। हम इसका कोई वो ढूंढना चाह रहे हैं, कोई एनालॉगी हमको समझ में नहीं आ रही है इस वक्त कि हम कोई बहुत इजी सी एनालॉगी दे सकें, लेकिन दिस इज व्हाट इज कलेक्टेड इन अ कल्चर कलेक्शन, ठीक है। स्पेशली ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है जहां पे एनवायरमेंटल सैंपल्स पे स्टडी हो रही है, वहां जहां नए स्पीशीज डिस्कवर होते हैं, तो और अच्छा दूसरी चीज ये भी है कि कल्चर जब तक आपके पास प्योर कल्चर नहीं है, यू कैन नॉट स्टडी इट्स द कैरेक्टर्स दैट आई मेंशन, तुमने देखा था मॉर्फोलॉजी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, अनलेस यू हैव वन कल्चर इन इट्स प्योर फॉर्म, अगर वो सिर्फ एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो आप कभी नहीं स्टडी कर सकते या कभी भी कैरेक्टराइज नहीं कर सकते उसको कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका सेल शेप कैसा है, उसके क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो प्रोड्यूस कर रहा है, फॉरगेट अबाउट डीएनए एनालिसिस क्योंकि वो एक मिक्स्ड सिस्टम है। So you have to have a method to first isolate it and grow it in its pure form and then be able to perform this polyphasic taxonomy that I am mentioning. ठीक है, बढ़े आगे, कितना हो गया? ओ गॉड 45 अभी हो गया, यहीं पे स्टॉप करें क्या इसको? तुम लोग मुझसे और पूछ लो प्लीज, जितना डीएनए वगैरह का जो तुम लोग को नहीं समझ में आया वो पूछ लो, ताकि हम लोग फिर जब नेक्स्ट टाइम बढ़ेंगे तो अभी हम लोग क्लासिफिकेशन तक पहुंचे ही नहीं है, हम लोग सिर्फ वहां तक पहुंचे हैं कि हाउ डू यू डिसाइड इफ एन ऑर्गेनिज्म इज न्यू और नॉट। सो बेसिकली मैंने तुम्हें बहुत सारे थंब रूल्स दिए कि डीएनए अगर एसेस कर रहे हो तो क्या होना चाहिए थंब रूल, फॉर एग्जांपल ये रिलेटेडनेस जो अगर है, टीएम की रिलेटेडनेस, हाइब्रिडाइजेशन कितना % होना चाहिए, जीसी कंटेंट कितना होना चाहिए,
Now, please, for the next 15 minutes, I really don't want to go for any new aspect here. Please ask me whatever questions. तुम लोग सिर्फ 14 लोग हो और बहुत आराम से मेरे से पूछ सकते हो अपने concept clear करने के लिए. Please, I would strongly encourage. पूछो क्या समझ में नहीं आया. Let us go back. देखो, molecular characteristics तो बिल्कुल clear. Sorry, ये characteristics तो बिल्कुल clear है कि आपको कभी भी किसी organism को classify करना है तो my morphological characteristics are the easiest which can be assessed कि क्या different parameters हैं, and you can also characterize the physiological and metabolic. Here is where I was saying that you need to have the culture in pure state, and this is the reason why the microbial taxonomy picked up only after novel techniques could be developed for culturing organisms, microorganisms. तो ये सारे characteristics को assess करने के लिए you need to have a pure culture, a type culture. Let's say this is a representative of this particular taxon. So you will collect that particular type culture and compare your novel species with that particular type culture. Ecological characters तो तुम्हें environment में ही characterize करने होंगे कि उसका habitat क्या है, growth conditions क्या हैं, and genetic characters ये हम लोग शायद better समझेंगे जब हम लोग bacterial genetics करेंगे. What I did try to introduce here were the molecular characteristics, which kind of now you have to start off with molecular characteristics to determine the taxonomy of organisms. तो इसमें इसलिए मैंने G+C content तुम्हें समझाया कि G+C content क्या होता है. देन हाइब्रिडाइज करते हो तो क्या हो सकता है. तो ये दो स्पीशीज की रिलेटेडनेस तुम इससे एस्टैब्लिश कर सकते हो कि कितनी होमोलॉगी है. बोथ DNA एंड न्यूक्लिक एसिड ड्यूरिंग एवोल्यूशन विल स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग चेंजेस. तो जितने ज्यादा इवॉल्व होंगे या जितना डिस्टेंट होंगे वो फाइलोजेनेटिकली उतना कम होमोलॉगी होगी उनमें, and such kind of a association will not be possible if they're two distantly related organisms. So this kind of a homology can be established. Then of course तुम fingerprinting करके signatures, तो fingerprint जैसा तुम जानते हो कि on your thumb you take a fingerprint because that is signature for you, for a particular individual. Similarly, even for bacteria or for fungi, you can generate such markers, such signature profiles that can say what kind of an organism you have in hand. And then I said कि sequencing जब आप करते हो तो of course पूरा का पूरा genome तो तुम sequence कर ही सकते हो, लेकिन logistic reasons से even this resolution can be obtained with some of the shorter sequences, shorter genes. What is advised is to not go for just one gene but to go for multiple genes which will give you robustness. And here this was just an example of different kinds of genes that can be used. तो gyrase, DNAs, हम name से तुम्हें confuse नहीं करना चाहते हैं. But these genes could be specific for a group. For example, bacteria can only be so RPO-A, RPO-B. These are not genes which are considered for fungus. But these 20S RNA, of course, this is beta tubulin gene. These are eukaryotic genes which are used for fungal classification. And then I talked about why 16S RNA. I tried to explain to you what is the significance of the marker having both conserved and variable regions vis-a-vis a marker which is completely conserved or is completely variable. And then I told you that other than DNA, you can also have amino acids and proteins which can be. Ma'am, can you go back to the 16S RNA slide? हाँ मैम ये वाली. Yeah. मैम इसमें मैम जैसे ये जो एक सेकेंड. हाँ मैम ये जो रीजन्स आपने बताया था हाइपर वेरिएबल रीजन्स, सो मैम मतलब इसमें बस वही था सिग्निफिकेंट कि दीज आर मतलब दीज आर नेसेसरी बिकॉज टू मतलब जिससे और इफेक्टिव हो जाए हमें किसी स्पीशीज को. तो मैंने नहीं कहा वेरिएबल, मैंने हाइपर वेरिएबल नहीं कहा, लेकिन तुमने देखा कहीं पे. तो एनीवे हाइपर वेरिएबल रीजन्स भी होते हैं इसमें. आई जस्ट स्टिक टू वेरिएबल रीजन्स. तो when you have to perform nucleic acid based sequencing or identification, you need to have that particular marker in a number or in copies which can be detected. ठीक है. तो सबसे पहले तो तुम्हें एक बैक्टीरिया है उसका एक जीन तुम अगर आइसोलेट करोगे तो उसको तुम स्टडी नहीं कर सकते. फॉर टेक्निकल पर्पसेस यू नीड टू हैव मल्टीपल कॉपीज ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्कर्स. हाँ, फॉर एनी मेथडोलॉजी दैट यू फॉलो. So what I was telling you was that 16S rRNA marker, 16S RNA gene can be used as a marker because it has both conserved and variable regions. और हम इसका significance तुम्हें बता रहे थे कि जब तुम्हें multiple copies बनानी होती हैं
तो in the process of PCR you need two anchors which define कि ये कितना बड़ा एम्प्लीफिकेशन होगा या कौन सा रीजन एम्प्लीफाई होगा. इसके लिए तुम्हें दो एंकर्स लगाने होते हैं दोनों लिमिट्स पे, दोनों एंड्स पे. तो अगर तुम्हारे पास कंजर्व्ड रीजन्स हैं जो फ्लैंक कर रहे हैं एक वेरिएबल रीजन को, और तुम्हें पता है कि ये कंजर्व्ड रीजन क्या है बिकॉज दीज आर अनऑल्टर्ड अक्रॉस लेट्स से द बैक्टीरिया, then you can fix these anchors in the conserved region and let PCR happen such that इन दोनों anchors के बीच का जो sequence है वो amplify होगा, multiple copies बनेंगे. लेकिन यही मेरा क्वेश्चन था कि आगे है ना, अगर ये नहीं होता, अगर ये कंजर्व नहीं होता तो तुम पीसीआर करते कैसे, कैसे तुम एंकर्स को लगाते कि वो एम्पलीफाई कर सके, है ना. वंस यू स्टडी पीसीआर इन डिटेल तुम्हें समझ में आएगा कि एंकर क्या है, ये प्राइमर्स होते हैं और ये क्या क्या सर्व करते हैं. लेकिन एज ऑफ नाउ आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि अगर हमें टारगेट करना है वेरिएबल रीजन को तो हमें फ्लैंकिंग रीजन कंजर्व चाहिए. अब समझ में आया सत्यकम? यस मैम. ठीक है, ओके गुड. अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लो. हाँ शीट टेल मी. Ma'am, like when we use PCR techniques for like COVID-19 testing, do we use the same methods there also? Yes, unless you know what is present on the sides or तो तुम्हें कहीं ना कहीं लिमिट करना पड़ेगा. जब तुम एक पीसीआर मशीन में एक पेपर को रखते हो तो तुम उस जोन में रखते हो ना जो एम्पलीफाई करेगा, है ना, उस पर्टिकुलर एरिया के बीच में जो है वही तो एम्पलीफाई होगा बार बार, या मल्टीपल कॉपीज बनेंगी उसकी. तो एग्जैक्टली वही एनालॉगी, वैसे तो ये बहुत अच्छी एनालॉगी नहीं है लेकिन हम तुम्हें बस क्योंकि तुम पीसीआर नहीं जानते, या तुम्हें हम पीसीआर का कुछ वो दिखा दें क्या, कोई वीडियो दिखा दें क्या, क्या करें. just 1 minute and I'll show you, probably make it easier for you. ठीक है, आई थिंक दिस फिगर विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इट अ बिट, तो तुम्हें समझ में आएगा. Are you able to see this figure, students? It's loading. Yes, ma'am. अब देखो तुम्हारे पास ये है जिसका तुम्हें 10 to the power 9 कॉपीज बनाना है. दिस पर्टिकुलर जीन इज ऑफ योर इंटरेस्ट. हाँ, तुमने जब एम्पलीफाई करना शुरू किया तो यू नीड दीज टू व्हाट आई से एज द बाउंड्रीज. तुमने डिफाइन किया कि तुम्हें इसके बीच का सेगमेंट के मल्टीपल कॉपीज बनाने हैं. तो क्या होगा, यही एक्सटेंड करके इसकी कॉपी बनाएगा. But for this to anchor, for this to actually associate with DNA, this has to be a small strand which is complementary to where you want it to attach. है ना? आशी समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अगर तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे क्या सीक्वेंस होगा तो तुम कैसे अटैच करोगे इस प्राइमर को. इट्स कॉल्ड अ प्राइमर जो एक्सटेंड करके इसकी कॉपी बनाता है. ठीक है, तो यहाँ देखो ये अटैच, इसने एक कॉपी बनाई, दोनों स्ट्रैंड की कॉपी बन गई. Then again another cycle of the PCR and again same primer extend करता है और बहुत सारे multiple copies बनाता है. ठीक है, अब इससे ज्यादा अगर मुझे बताना होगा तो मुझे एक्चुअली पीसीआर पे पूरी क्लास लेनी पड़ेगी जो हम लेना नहीं चाहते हैं. तो ऐसे कॉपीज बनती जाएंगी, बट यू नीड टू हैव दिस सीक्वेंस नोन. अभी समझ में आ रहा है? Ma'am, so it's basically like the start and stop codons in Exactly. Codons नहीं. अच्छा. No, ma'am, like उस sort of मतलब वैसा purpose serve करते हैं. हाँ, तो इसके आगे नहीं होगा एक्सटेंशन. आपको सिर्फ आप डिफाइन कर रहे हो लिमिट अपनी कि हमें इसके बीच का वो करना है, एम्पलीफाई करना है ना. और मान लो, तभी हम बार बार कह रहे हैं कि अगर मान लो तुम्हें नहीं पता होता कि ये क्या है यहाँ पे, जो पॉसिबल सिर्फ कंजर्व्ड रीजन है, अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम किसी प्राइमर को कहां से तुम डिफाइन करोगे अपने लिमिट्स को. ठीक है, आप क्लियर हुआ? Yes, ma'am. आप किसी को एनीथिंग एल्स? आशी, व्हाट वाज योर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? Or was this? Ma'am, this was it. I wanted to ask like how do they do it?
ठीक है, अभी समझ में आया? तो हमारे Yes, लिए ma'am. PCR समझना जरूरी नहीं है. Why we are doing PCR? We are doing PCR to make multiple copies so that those can be sequenced and assessed for phylogenetic affiliation. ठीक है? But for doing it, you need these variables and variable in conserved regions. Okay, but with the advent of whole genome sequencing, अब अगर आप पूरे genome को sequence कर रहे हो, तो you really don't need these smaller fragments of information. You can in fact get an information about the whole genome and then relate it to the other organisms. Is that okay, students? तो next class में इसके आगे लेंगे. अगर आप लोग चाहो तो मैंने तुम लोग को 2-3 चीजें बोली हैं. What is a species, ये मुझे बताने के लिए. And what was the other thing that I said? क्या और चीज मैंने बोला था? GC content of human beings. GC content of human beings, वो तो तुम लोग को तुरंत अभी गूगल पे मिल जाएगा. बट ये मुझे नेक्स्ट क्लास में तुम लोग बताओगे. ओके Ma'am, also, हाँ बोलो. could we get some extra reading material from your end so that we can read more about this? प्रेस्कॉट पढ़ो. Okay, प्रेस्कॉट तो ma'am. मैंने बोला हुआ है हमेशा कि प्रेस्कॉट इज हमारा बाइबल अभी. हाँ, फॉर एनीथिंग ma'am. एनी टॉपिक प्लीज रेफर टू प्रेस्कॉट. अगर तुम लोग बेसिक्स पढ़ोगे पीसीआर का तो तुम्हें और भी क्लियर हो जाएगा. हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में तुम लोग पढ़ने वाले हो और हम हर चीज की बेसिक्स बताते जाएंगे तो फिर हमारा तो कोर्स कुछ होने वाला नहीं है. इसलिए मैंने तुम्हें एकदम ब्रॉडली बताया कि क्या है हमारी रिक्वायरमेंट फॉर माइक्रोबियल टेक्सोनॉमी. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स. हेलो मैम. हाँ कौशिक पूछो. मैम हम 2 क्विज की जगह 3 क्विज कर सकते हैं और बेस्ट ऑफ द 2 चूज कर सकते हैं. नहीं कर सकते हैं. बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं. इसलिए क्योंकि इनफैक्ट आई एम वन ऑफ द ओनली फैकल्टी मेंबर्स who informed the head that I will only fix up the evaluation criteria. I presented it to my students and if they have a query or question, I will accommodate it. Okay. This did not happen when I took the first class and I was mentioning to you about the evaluation pattern. किसी को नहीं ये समझ में आया कि best 3-2 जो भी करना है. तो then I confirmed कि ये मेरा criteria है. However, there is one thing that I can do and you might want to discuss it with your class and come back to me whether or not it's acceptable to you. What I can do is increase the weightage of the viva. And this I can do with a considerable change. I mean, this I have in fact taken a special permission from the Dean Academics that I would like to increase the weightage of viva. अब तुम बताओ कौशिक कि तुम्हें viva का increase करना है weightage या तुम टाइम लेना चाहते हो अपने ग्रुप से डिस्कस करने के लिए. आई एम ओपन टू इंक्रीजिंग द वेटेज ऑफ वाइवा. दैट्स द ओनली थिंग आई कैन डू. बताओ. ओके मैम, फिर तो डिस्कस करके ही डिस्कस कर लेना. और वाइवा में हमेशा ये याद रखना कि वाइवा विल ऑलवेज बी विद द कैमरा ऑन. जिसका कैमरा ऑन नहीं होता है उसका वाइवा नहीं होने वाला है. तो वो आप डिस्कस कर लीजिए. मैंने चूंकि डीन एकेडमिक से बात की हुई है ओनली फॉर दिस पॉइंट. ही हैज अग्रीड कि हम चेंज कर सकते हैं बट ओनली वाइवा. वो तुम डिस्कस करना. बट क्विज वगैरह हम कुछ नहीं कर सकते. तुम लोग ने कभी भी पहले कुछ नहीं बोला जबकि पूरी की पूरी अटेंडेंस थी. ऐसा भी नहीं था. अभी तो सिर्फ 10-12 लोग हो तुम लोग लेकिन पूरी की पूरी अटेंडेंस थी. नोबडी रेज्ड एनी क्वेश्चन. अभी तुम लोग का क्विज का जो फर्स्ट क्विज अनएक्सपेक्टेड थी काफी. करेक्ट. हाँ अनएक्सपेक्टेड ही एक्सपेक्ट करना. अब सारे इवैल्यूएशन कंपोनेंट्स अनएक्सपेक्टेड ही होंगे. ठीक है. तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि कोई ट्रेंड फॉलो होगा या कुछ. नो, विथ ऑनलाइन मोड दिस इज व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट that there will be. In fact अगर तुम्हें हम अपनी डीन एकेडमिक से कॉन्वर्जेशन दिखाएं तो दिस इज हिज सजेशन कि अनएक्सपेक्टेड से ही आप इवैल्यूएट कर पाओगे. ठीक है. तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग टू बी एक्सपेक्टेड. कुछ नहीं. सारे के सारे ट्रेंड्स अनएक्सपेक्टेड होंगे. But you can discuss and you can come back to me, but this has to be done by the end of this week. If you want, in the next class you can tell me whether or not you want an increase in weightage of viva. Okay, Kaushik. Ma'am, can you please clarify a little bit about the term paper also? Like, मतलब, ma'am, actually, मतलब कि कितना broad topic कम हो ना. तुम लोग अभी इतने कम हो. एक्चुअली हम उसका एक वो डिजाइन एक ड्राफ्ट बना रहे थे इंस्ट्रक्शंस का फॉर टर्म पेपर. क्योंकि सारे तो अटेंड करते नहीं हो सिंक्रोनस मोड में, है ना. मैम उठाती रहती हैं, बोलती रहती हैं, नाम तुम लोग का लेती रहती हैं. तो टर्म पेपर के हम पूरा एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस बता रहे थे. व्हाट इज एक्सपेक्टेड, प्लेजियारिज्म कैसे आप चेक करोगे. प्लेजियारिज्म हैपेंस टू बी अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द टर्म पेपर. व्हाट इज द वर्ड लिमिट दैट इज एक्सपेक्टेड. अभी तुमने तुमको टॉपिक्स भी नहीं दिए हैं. Then how will I was thinking of giving it to you by minor 1. Yeah, just after minor. Sorry, there's only one minor. Minor के just बाद हम आपको रिलीज करना चाहते थे ये लिस्ट जो हम बना रहे हैं. हाँ, लेकिन it will be self-explanatory. सत्यकम, I will make the document such that all the instructions are in place and कोई confusion का चांस ही ना रहे.
ठीक है, but let me make it. Let me draft it first and Also, then I'll ma'am, share. term paper would be individual or ma'am can It be will be individual. It will be individual. This is the point I haven't been able to release the list क्योंकि मेरे पास इतने सारे topics, अभी हम सब topics ही वो सोच के बना रहे हैं कि क्या क्या topics हो सकते हैं. ठीक है, और ये हाँ, Plagiarism can be cross-check it from our side once before submitting. I can try to put that option in the software. Usually उसमें होता है कि first submission लेना है या फिर the student can revise, but because it is for you it is kind of first time problem biology. बाकी तो सब्जेक्ट ने किया ही होगा, plagiarism check तो उसमें भी करते ही होगे नहीं शायद. मैम No, ma'am, अभी आज तक तक तो नहीं किया. तो ठीक है, हम इतना कर सकते हैं कि I can permit a second submission after checking the plagiarism. You can revise and submit the second time. That is one thing that I can accommodate. ठीक है, और बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस हम तुम लोग को आई विल प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट एंड आई विल सेंड अक्रॉस द इंस्ट्रक्शंस, सो प्लीज उसके लिए मत परेशान हो. If that is all students, then we will stop the class and